बेटा, मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट क्लास 11th का यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स एक भाग पढ़ाने वाला हूँ। थर्मोडायनेमिक्स का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स जो बहुत ही ज़रूरी है वो समझने के सिवा थर्मोडायनेमिक्स का अगला पार्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा या किसी को भी समझ में नहीं आएगा। और टर्म्स दैट शुड बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, दैट शुड बी नोन टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट प्रॉपरली, then they are in a position to understand the thermodynamics in a later stage. So what are the different thermodynamic terms that will be explained in the beginning, and then after I will explain the what is meant by system, what is meant by surrounding, and so on. That is the part of thermodynamic terms. Then उसके बाद अपने को सिस्टम सराउंडिंग क्या, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री ये क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम और व्हाट इज मीन बाय द स्टेट ऑफ द सिस्टम, वो पार्ट अपने को देखने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स, दैट वी हैव टू सी। Thermodynamics, this word thermo is related with the heat. Dynamics, this word is related with the change or the motion. From this word, the definition may be given as the flow of heat or different forms of energy into or out of the system as it undergoes physical or chemical transformations. That study is known as thermodynamics. Means what? थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हीट फ्लो सिस्टम के अंदर और सिस्टम में से बाहर कैसे होता है, साथ साथ अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है। अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मीन्स लाइट है, साउंड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एंड सो ऑन. These different forms of energy, how they are exchanged, showing the interrelation or exchange from system surrounding to system, that we have to see with the heat flow and so on in the branch of science, that branch is called thermodynamics. In the chemistry, thermodynamics is nothing but the flow of heat or the transfer of thermodynamic transformations of different forms of energies into the system or out of the system during the physical and chemical transformation that we have to study in this chapter. एक चैप्टर में केमिकल चेंजेस होते हुए, जब केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल चेंज होते वक्त हीट अंदर आती है सिस्टम के या सिस्टम के बाहर जाती है। हीट का कन्वर्शन वर्क में होता है, क्या वर्क का कन्वर्शन हीट में होता है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सचेंजेस रिगार्डिंग द हीट फ्लो एंड ड्यूरिंग द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, दैट इज स्टडीड इन दिस चैप्टर। इसके अंदर अपने को थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स जो है वो देखना पड़ेगी। थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स में पहले अपने को सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है, ये समझ के लेना बहुत जरूरी है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सिस्टम मीन्स व्हाट। सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which we have taken under the thermodynamic study. That part is called the system. थर्मोडायनेमिक स्टडी करने के लिए हीट अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उसमें जो मैटर है वो एक्सचेंज होता है नहीं होता है,
ये थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने के लिए जो पार्ट अपन ने यूनिवर्स का सब दुनिया का जो पार्ट कंसिडर किया है वो पार्ट क्या है, सिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग दिस ग्लास ऑफ मेटल दैट इज द स्टील ग्लास विच इज ए कंडक्टर ऑफ हीट. इसमें अपन गर्मा गर्म चाय लिया है. ये चाय का ग्लास है, स्टील का ग्लास है, तो उसमें से गर्मा गर्म चाय होने की वजह से इसके अंदर की हीट एक मेटेलिक वाल से या ग्लास के दीवार से बाहर आ सकती है, या बाहर की ठंडाई अंदर जाके समा सकती है. मीन्स देयर इज ए हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. At the same time, these are the vapors of the tea which are coming out of the system. Means what? The matter which is present in the glass in the form of tea that can be exchanged with the surrounding. ये जो होता है ये समझने के लिए आपको सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है समझ में आना. सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच वी हैव टेकन अंडर द थर्मोडायनेमिक्स स्टडी. दुनिया का वो कौन सा छोटा पार्ट है जो पार्ट अपन थर्मोडायनेमिक्स स्टडी के लिए इस्तेमाल किया है, कंसिडर किया है, सोचा है. जैसे कि यहाँ पे ग्लास है जिसमें गर्मा गर्म चाय है, ये एक सिस्टम हो गया. इसके बाहर का जो भी कोई पार्ट रहेगा यूनिवर्स का पूरी दुनिया का पार्ट, उसको अपन सराउंडिंग बोलेंगे. सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which we have taken under the thermodynamic study, and whatever the remaining part beyond the system, that part of the universe rather than that of the system is called the surrounding. सिस्टम को छोड़ के जो भी कोई बाकी भाग रहेगा यूनिवर्स का उसको अपन सराउंडिंग बोलेंगे. अब आते हैं बारी बाउंड्री की. सिस्टम को और सराउंडिंग को दोनों को अलग करने वाली जो लाइन होंगी, इमेजिनरी लाइन और रियल सरफेस ऑफ द वॉल ऑफ दैट वेसल और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सिस्टम, दैट इमेजिनरी लाइन और द वॉल और द सरफेस separating system and surrounding, that separating line or the separating surface is called a boundary. In this way, a system is a part of the universe. Surrounding means a part of the universe other than the system, and boundary is the separating line between the system and surrounding. System और surrounding के बीच में का जो भाग है, जो हिस्सा है या जो दीवार है, जो सरफेस है, उस सरफेस को अपन बाउंड्री कहेंगे. राइट. अब तक अपन सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है समझ चुके हैं. देन what are the different types of system that we have to see? There are three types of systems: open system, closed system, and isolated system. In the open system, glass is open. Whatever the tea which we have taken inside this metallic glass, in the steel glass, that is hot tea. गर्मा गर्म चाय अपन इसमें लिया है, तो ये जो चाय है वो गर्म है, गर्मा गर्म, उसमें से ऐसे वेपर्स निकलते रहेंगे. मीन्स व्हाट? मैटर विच इज प्रेजेंट इन दिस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हॉट टी दैट कैन बी एक्सचेंज्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. एक ग्लास को छोड़ के जो बाकी हिस्सा है वो सराउंडिंग है. मान के चलो कि तुम किचन में बैठे हो, चाय पी रहे हो ग्लास से, तो ग्लास को छोड़ के जो तुम्हारा किचन का रूम का हिस्सा रहेगा उसको भी तुम अपने कन्वीनियंस के लिए सराउंडिंग मान सकते हैं, जहां पे ए हीट एक्सचेंज और द मैटर एक्सचेंज कैन बी पॉसिबल. मीन्स ए ओपन सिस्टम में इसके अंदर जो मैटर है हॉट टी, उसका भी एक्सचेंज होता है. बाहर से अपन चाय इसमें डाल भी सकते हैं, अंदर का चाय बाहर भी आ सकता है. Matter can be exchanged from system to surrounding, surrounding to system. At the same time, what about the heat energy? Heat energy can be exchanged from system to surrounding and surrounding to system also. Being the wall of this glass, steel glass is conductor, that is the metallic glass. Means open system is a system in which matter
as well as energy can be exchanged with the surrounding. Matter and energy, particularly heat energy, can be exchanged from system to surrounding and surrounding to the system. That type of system is called open system. Then come to the next system, that is the closed system. In this closed system, consider one of the glass that is made from the steel material, steel glass, in which we are taking the hot tea, but it is covered by the lid. It is a closed glass. Being it is closed, vapors of the tea cannot escape from the glass, being it is covered by the lid. इसको ढक्कन से ढके वाला होने के कारण इसमें से टी में निकलने वाली वेपर्स जो है वो बाहर नहीं आ पाएंगी. बाहर का चाय अंदर अपन डाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसका ढक्कन पक्का लगाए वाला है. लेकिन इसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो बाहर आ सकती है क्योंकि ये मेटेलिक ग्लास है, स्टील का ग्लास है. स्टील का ग्लास बाहर से पकड़ लिया गर्मा गर्म चाय को तो बाहर से भी वो अपने को गर्म लगता है. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो बाहर आ सकती है या बाहर की हीट एनर्जी अंदर भी जा सकती है. व्हाई इट इज सो? बिकॉज द वॉल ऑफ द ग्लास इज a metallic one and metal is a conductor of the heat energy. Means closed system is a system in which energy, that is heat energy, can be exchanged from system to surrounding and surrounding to the system. But matter cannot be exchanged from system to surrounding or surrounding to the system. Means what? In the closed system, only heat energy can be exchanged. Matter does not exchange. Then third type of system, that is the isolated system. Example, thermos flask. Thermos flask is an example of isolated system. In the thermos flask, what happens? Its walls are made from the insulated material, and in which we are taking the hot tea. गर्मा गर्म चाय अपन जब थर्मास में रखेंगे ना तो उसकी थर्मास की जो बाहर की दीवारें रहती है वो इंसुलेटेड मटेरियल की रहती है. वो इंसुलेटेड मटेरियल बाहर की हीट अंदर नहीं आने देता, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता. एट द सेम टाइम दिस इज कवर्ड बाय द लिड. उसको पक्का ढक्कन लगाए वाला है थर्मास को, तो अंदर का मैटर जो है हीट, हॉट टी, that matter cannot be exchanged with the surrounding. बाहर का अंदर भी नहीं जा सकता, अंदर का बाहर भी नहीं आ सकता. चाहे अंदर का गर्मा गर्म चाय अंदर ही रहेगा. What about heat energy? Heat energy cannot be exchanged from system to surrounding and surrounding to system. Why it is so? Because the wall of the container, that is the thermos flask, is made from the insulating material. ये थर्मास फ्लास्क में ना हीट एनर्जी बाहर के अंदर या अंदर के बाहर जा सकती है, ना ही इसके अंदर जो मटेरियल है, मैटर है, वो एक्सचेंज हो सकता. वो बाहर या बाहर का अंदर एक्सचेंज नहीं हो सकता. बोले तो आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर एज वेल एज एनर्जी कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग. दिस इज ए isolated system. Then we have to see the next bit, that is the state of the system. A state of the system क्या होता है वो देखेंगे. A thermodynamic system is said to be in a certain state when its all properties are fixed. Thermodynamic system को अपन वो पर्टिकुलर या सर्टन स्टेट में है ऐसा तब बोलेंगे जब उसके सब वेरिएबल्स
फिक्स किए वाले हैं। सब वेरिएबल्स उसके कौन से हैं? सिस्टम के वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर द डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन विच बाय फिक्सिंग दीज वेरिएबल्स वी कुड एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए जो जो उसके वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स को फिक्स करना पड़ता है, तब वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने को एक्सप्लेन करने आती है। जब भी उसके वेरिएबल्स फिक्स किए वाले होते हैं या फिक्स हुए वाले होते हैं आफ्टर इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन वी कुड से दैट द गिवन सिस्टम इज इन ए पर्टिकुलर और इन ए सर्टेन स्टेट। मान के चलो एक सिलेंडर है, इसमें अपन ऐसे पिस्टन फिट किए वाला है। दिस पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस, weightless, and which is movable from up and down. Weightless, frictionless piston is movable from up and down, and in this cylinder we have taken 1 mole of gas, and it is inserted frictionless piston from upper side. Then it is coming down and get stable at this point, point 1, where the variables are P1, V1, T1. Pressure is P1, volume is V1, and temperature is T1. That certain state of the system is called as initial state. That variables are called as state functions, state variables, or the thermodynamic parameter also. Whenever the magnitude of these variables changes, then the state of the system may change. For example, consider that whenever we are providing heat energy to this system by the burner, then what happens? After absorption of heat energy by the 1 mole of gas which is enclosed in a cylinder, that gas molecules, its kinetic energy becomes more. The molecules becomes energized. Due to increase of kinetic energy, their movement will become fast. The velocity becomes more, and they will start move here and there with larger velocity. And due to that, what happens? The number of collisions with the wall of the piston and with the wall of the container increases per unit area. Due to the number of hits or the collisions with the wall of the container, what happens? The pressure increases. After increasing the pressure, this piston moves upward. That gas starts to expand after absorption of heat energy. After expansion and increase of pressure, what happens? This piston moves up to this point. This is noted as second position. This is the first position. This is the first position, and this is the second position. After expansion of gas, after absorbing the heat energy, it reaches to the second position. At this point, pressure becomes P2, volume becomes V2, and temperature is also increasing due to the absorption of heat energy. The temperature becomes T2. At this point, at the point 2, we could say that now the system is in a second state or the final state. In this variables, pressure and temperature, whenever we are fixing, then automatically the third variable V is automatically fixed. Means pressure P and T are called independent variables. But volume V is a dependent variable. Why it is so? Because its volume is depending upon the pressure P and temperature T. Means pressure P and T are called independent variables and V is called dependent variable. Interrelation between the pressure, volume and temperature for the pure gas is given by the equation of state. Equation of state,
is given by the equation of state. Equation of state is given as PV is equal to RT whenever N is equal to 1. For 1 mole of gas, equation of state is given by PV is equal to RT. Whenever we know the value of pressure P and temperature T, then the V can be calculated with the help of equation of state. This is regarding the thermodynamics. Then the terms involved in it as like the system, surrounding, boundary, different types of systems, open system, closed system, and isolated system. And we have seen today also the state of the system. This is regarding the thermodynamics and its introduction and basic concepts. Thank you.